Good afternoon, all. Today we have Mr. Venkat uh, as our guest speaker on the financial instruments. And as you all know, Mr. Venkat has written this one book on the financial instruments and has been kind enough to provide me a complimentary copy also. I thought that why we should not have Mr. Venkat also to actually express his thoughts on the subjects financial instruments. And Mr. Venkat, we have you can see from the online attendance around 59 persons are there who are attending this class, as well as in the conference room where we are sitting, there are around 20 persons who are actually attending the class. So then we have our two speakers, Tikendra Singhal and Ayush Agarwal, who will be speaking on the financial instruments, more particularly on classification of assets today. So before that, before they start, uh, I would request you to please guide us on the subject. Okay. You can say. Great. Thank you, Bhupendra ji. I think, I've been seeing all your videos, all your activities on the LinkedIn and so on. You have a real passion for coaching the students. I don't know, very few people have this passion, and I think you have been doing it very selflessly. It's an excellent effort that you're doing. I would like to be a part of this one. I'm very happy to interact with our colleagues. Okay. Today I have a hard stop at 3:30. See, what we will do is we will definitely, as I told you already, in the morning itself, I told you, Bhupendraji, that the call is there at 3:30. I actually scheduled it at 3:30 because I can spend some time. Okay. I understand today you have this classification of financial assets, right? So has this classification of financial assets been completed, or you still have to start that topic? They will start today. You're going to start today? Okay. See, what I will do is I will probably give an overview of that. Okay. In the next 10 minutes. Okay. I'm sorry today because of this one, but I'll try to give an overview. And what I actually wanted to do was I thought this was already completed, and then I will give you a sort of a I'll ask you some questions on this one. That is what I thought I will do today. But anyway, what we can do is we will start with this one. Okay. See, this classification of financial assets is extremely important because all the accounting entries is based on the classification. So classification assumes very key importance. See, not only that, I think for all of us, okay, and especially for those who are pretty new to the CA course, you have all been exposed to Ind AS 109 only, as against the earlier standard, which is IAS 39, the equivalent of this financial instrument standards, IFRS 9. Was the earlier standard was IAS 39. Okay, so this IAS 39, generally IFRS is regarded as a principle-based standard, and the US GAAP is called as the rule-based standard. In spite of this one being a principle-based standard, the standard setters found that there were definitely some aspects, especially in IAS 39, which were somewhat rule-based. So actually, they wanted to improve on that, and that is the reason why the whole exercise of promulgating a new standard IFRS 9 came into being. So IFRS 9, so to say, is a sort of replacement for the earlier standard, which is IAS 39. In a nutshell, that's what I wanted to tell you. Now, fortunately for all of you, you don't have to unlearn IAS 39 and then learn IFRS 9. So directly we are exposed to Ind AS 109, which is exactly a cut copy paste of IFRS 9, except for only one change. Okay, I will talk about it in the next week. I will talk about that change.
But apart from that, you can take it that it is exactly the same. Okay, as far as 109 is concerned, it's exactly the same as IFRS 9. So one of the reasons why this IFRS 9 itself was promulgated is mainly to do away with the rule-based classification criteria for classification of the financial assets. Okay, so that is one of the reasons. Now this classification of financial assets itself takes almost about 1 hour for me to explain. Okay, because it is so lengthy. There are a lot of concepts that we need to understand and so on. But right now today we won't be able to do that. Okay, but what I would suggest is that you go ahead with the discussing this one. In the next week, that is definitely next Saturday, I would like to spend 1 hour on this topic. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to put put the horse. Normally the horse comes before the cart. No, I'm going to put the cart before the horse, in the sense that I'm going to what happened? I was sharing my screen. Okay, I'm going to basically give you one particular problem here for you to think about it, because I won't. Oh, are you able to see my screen? We are able to see, sir. Okay, I'm going to give you one particular point here. Okay, and then stop it at that, because I won't have time today. See this one. Okay, is about the classification of financial assets, the assets which are classified as FVOCI for equity instrument and FVOCI for debt security. Okay. Now, these are the facts, and both these classification are about FVOCI only. Here, the first one is about equity instrument, the second one is about debt security. Initially, it was bought at 100 rupees. Okay, at the end of the first year, the value goes up to 115. So, in the case of equity instruments, this is taken to the other comprehensive income. Same is the case with the debt security as well. At the end of second year, the value is 125. Incrementally, 10 rupees is added to OCI. Here also incrementally 10 rupees is added to OCI. Okay. Now, as far as now in the third year, okay, this is liquidated at 130 rupees. So this 5 rupees is transferred to OCI. Here also 5 rupees is transferred to OCI. But what happens in the case of equity instruments, this is not plowed back to the equity to P&L. Okay, this OCI, whatever is parked in OCI, is not plowed to the P&L. Whereas in the case of okay, in the case of wait. So in the case of debt security, this is plowed back to the to P&L. From OCI, it is plowed back to the P&L. Okay. Now this is the rule. Okay, this is what you will read in the standard. This is how it is treated. But my question is, what is the logic or the rationale behind this one? Okay, what is the rationale behind not transferring this one? Okay, and transferring this one to the P&L. Okay, now the hint I'm telling you, the hint lies in the classification criteria of financial assets. So if you are able to understand the classification criteria, you should be able to answer this question. Again, one more hint I will give you. The reason why this is not plowed back to the P&L is not the same reason as to why this is plowed back to the P&L. In other words, even though the question is one, I'm expecting two answers. One as to why this is not plowed back, the other one as to why this is plowed back. The answers are both are different. Is my question clear to you? Yeah, question is clear, sir. Yeah. So why I'm putting this in front is because, okay, the reason is because, when you go through the I'll stop sharing. Okay, when you go through the classification criteria, keep an eye on this one. Keep an eye on this question, and then accordingly frame up your mind in such a way that you are able to answer this question. Okay, I'm going to give you the explanation. I'm going to give you the classification in the next Saturday. I will give you the classification financial assets. Even though it is covered, I will do it once again, and I will also answer this question after hearing from you
your views on this one. So you have enough time for you to prepare the answer for this question. Come prepared in the next class. I want to see a few answers as well. Okay. Uh, we will certainly try to find the answers. Most of us are actually beginners for the subject financial instruments, but let's see that what happens in the next class. Yeah. No, definitely I will answer. But what I want is, I want you to go through so that you are able to see, and also because whoever is going to cover the classification criteria today, keep an eye on this question so that you are able to listen to the classification criteria more attentively in order to get an answer to this question as well. So with this, I will probably get, as I have a hard stop now. We will definitely continue in the next class. Okay, on next Saturday. Is that okay? Yeah. Thank you, Mr. Venkat. Thank you so much to be there with us, and we expect you in the subsequent classes also. So definitely. Yeah, because it is already about to be 3:30. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, and thanks for giving an opportunity. We will continue in the next class. Thank you. Bye. Thank you so much. So, Mr. Venkat has given a problem which we need to solve in the next week, and let's see that what our today's speaker, what they have to say about the financial instruments, classification of the financial instruments, and we shall try to find out the answers, if any, out of their presentations. So Ayush and Tikin. Yes. Good afternoon to all. मुझे तो सुनाई दे रहे हो यार, सबको सुनाई दे रहा है, थोड़ा तेज बोलो. Good afternoon to all. Our today's topic is financial instrument. As discussed in the earlier class, under India, three standard deals with the financial instrument. Index 32, Index 30, Index 10. Your presentation is not. Please share the screen. Yeah, now we can. Under India, three standard deals with the financial instruments. Index 32, Index 107, and Index 109. Index 32 deals with the presentation and classification of financial instruments and offsetting of the financial assets and financial liabilities. Index 107 deals with only the disclosure requirements about the financial instruments. And Index 109 deals with the recognition, derecognition, classification, and measurement criteria for financial instruments. Definition of financial. All participants are able to hear him, or should he speak with? Should he speak more louder? Online participants, can anyone raise the hands? So we are assuming that you all are able to hear. Yes. We are discussing the definition of the financial asset. Financial asset is the cash equity instrument of the another entity, contractual right to receive cash or another financial asset from another entity. Contractual right to exchange financial assets or financial liability with another entity under the condition that are potentially favorable to the entity. These are the basically derivative instruments. ये definitions अपन ने पिछली बार देखी थी, that what are the financial assets? A contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments under certain circumstances. Examples of financial assets can be the investment in equity instruments, investment in debt instruments, trade receivables, cash and cash equivalents, and etc. Definition of financial liability. Financial liability is a contractual obligation to deliver the cash or another financial asset to another entity,
or to exchange financial assets or financial liability with another entity under conditions that are unfavorable to the entity. These are basically derivative liabilities to the entities. Or a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments under certain circumstances. Our today's topic is classification of financial instruments. That is dealt by Index 32 and Index 109. Index 32 and 109 classify the financial instrument into three categories: amortized cost, FVTPL, and FVTOCI. So these are the financial assets. If we see these classifications, Financial these three instruments. classifications, these three classifications are for the financial assets. For financial instruments, and for financial liabilities, only two classifications are there. That is Amortized cost and FVTPL. amortized cost and FVTP. What is basically amortized cost? Amortized cost is the applies only to debt instrument that we discussed next. Amortized cost of a financial instrument is defined as the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition minus the principal repayments plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, and for the financial asset adjusted for any loss allowance. We discuss it with an example. Let us assume that we have a bond of rupees 1 lakh. After 5 years, it will give 1,50,000. By interpolation method, we have calculated the rate of interest, that is 8.45%. By this rate, we calculate the fair value of the bond. If we multiply the 8.45% with the opening balance of rupees 1 lakh, that is the purchase price of the bond, it means the interest amount comes around to the 8,447. Then the closing value is the 108,447. So इसमें 108,447 it will classify to amortized cost. Since the financial liabilities are classified at amortized cost, or since it will give us 1,50,000 after 5 years, then it will recognize the financial liability on the fair value. That is calculated as 108,447 in the first year, 117,160,8 is the second year, 1,257, 127 and 542 at the third year, and 138 and 316 is the fourth year. The rate is 8.45 is basically calculated by interpolation method that we learned in the intermediate classes. That is the NPV calculation, NPV at HR, NPV whole six methods से अपन एक्चुअली में इसको निकाल सकते हैं. FVTPL क्या होता है? FVTPL में अपन जो उसके फेयर वैल्यू में चेंजेस होते हैं उसको अपन P&L में रिकॉर्ड करते हैं, एंड FVTOCI में जो फेयर वैल्यू में चेंजेस आते हैं जब फाइनेंशियल एसेट्स में, उसको अपन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को अपन थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होता है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है. मींस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट क्लासिफाइड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. इफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट एनी इंटेंशन ट्रेड इन द सेम, एंड वो एंटिटी के पास इररिवोकेबल चॉइस है कि वो उसको एफवीटीओसीआई पे क्लासिफाई कर सकता है. यदि एंटिटी ने उसको एक बार एफवीटीओसीआई पे क्लासिफाई कर दिया तो अपन उसको बाद में दोबारा एफवीटीपीएल या अदर कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते. यानी एफवीटीपीएल में अपन इसको कब क्लासिफाई करेंगे? जब अपना इंटेंशन उसमें ट्रेड करना हो. यदि एंटिटी का इंटेंशन उसमें ट्रेड करना नहीं है तो एंटिटी के पास एक इररिवोकेबल होगी वो उसको एफवीटीओसीआई पे क्लासिफाई कर सकती है. एंटिटी के पास एक ऑप्शन है कि वो फाइनेंशियल एसेट्स को एफवीटीपीएल पे रिकॉग्नाइज कर सकती है यदि उसने उसको एफवीटीओसीआई पे क्लासिफाई किया है तो. लेकिन अगर उसको एफवीटीपीएल पे रिकॉग्नाइज तभी कर सकती है अगर इससे करने से कोई अकाउंटिंग मिसमैच और कम होता है. यानी कि बाय रिकॉग्निशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एज एफवीटीपीएल इट विल एलिमिनेट और सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ए मेजरमेंट और रिकॉग्निशन इनकंसिस्टेंसी while recognizing the financial assets in the books of accounts. Designation of the financial asset as FVTPL is permitted provided that by doing so it results in the financial statement presenting more relevant information. अकाउंटिंग मिस्टेक्स को अपन एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग मिस्टेक्स कैसे कम हो सकता है. इससे पहले अपन एक बार बात करें, जब ये जैसे आया कि भाई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का इन्होंने बात किया, आपने बिजनेस मॉडल टेस्ट की बात नहीं लिखी आगे. हाँ राइट. व्हाट इट इज टू मिस्टेक. अपन अकाउंटिंग मिस्टेक्स का एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एक एंटिटी ने फिक्स रेट परचेस करने के लिए वो फिक्स रेट डिबेंचर इशू किए.
और जो फिक्स रेट असेट्स और फिक्स रेट डिबेंचर दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। तो क्या है कि अब फिक्स रेट असेट्स को तो अपन एफईटीओ से या एफईटीपीएल में क्लासिफाई कर सकते हैं, और फिक्स रेट डिबेंचर है उसको अपन एफईटीओ से या एफईटीपीएल में क्लासिफाई, अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटीपीएल में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग दोनों की इंटरेस्ट सेम है, अगर दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे तो इससे बुक्स ऑफ अकाउंट पे कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अगर अपन दोनों को सेट्स को अगर एफईटीपीएल पे क्लासिफाई करेंगे तो दोनों का इंटरेस्ट सेटअप होगा और उससे इंफॉर्मेशन मोर रिलेवेंट जो होगी फाइनेंशियल इफेक्ट में। एक एग्जांपल है, A Limited purchased the equity shares of B Limited. The shares purchased by A Limited is not for trading purpose in foreseeable future. Identify the classification of financial assets. FPT or CI is correct. Next one is XYZ Limited purchased equity shares of B Limited. The shares purchased by A Limited is for trading purpose. Identify the classification of financial assets. FPT is the amortized cost is not applicable to the financial assets. भूमिका आपकी वॉइस आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। भूमिका अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, जो कि एक फाइनेंशियल एसेट्स का पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द टू टेस्ट, बीएमटी टेस्ट एंड एसटीपीआई टेस्ट। बीएमटी टेस्ट, what is BMT test? BMT test is the business model of entity, how it is managed assets. If it is held for trading, it is held for not for trading. एसटीपीआई टेस्ट में the contractual cash flows characterization of financial assets। ये एंटिटी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करना ही है। Classification of debt instrument depend upon the two tests, BMT test discussed, BMT test and SPPI test. ऊपर है। Classification of investment in debt instruments depend upon the two tests, BMT test and SPPI test. Now, how it is categorized, it will discuss. Amortized cost. Finance investment in debt instruments is classified amortized cost when it is hold to collect contractual cash flows, not for trading, and solely payment of principal and interest on specified dates. ये अपन को तो उसको होल्ड करने के लिए है, और अपन को सर्टेन डेट्स पे उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही पेमेंट लेना है, उसमें ट्रेड नहीं करना है। और यदि एंटिटी उसमें ट्रेड भी करती है, उसका इंटेंशन नहीं, यदि एंटिटी उसको होल्ड करती है और अगर उसकी प्राइसेस हाइक होती है तो एंटिटी उसको फ्यूचर में सेल भी कर सकती है। तो इसको अपन एफपीटी पे क्लासिफाई करेंगे। क्या समझा आपने? हैं? क्या तो ये कहाँ मतलब किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऐसे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हैं? तो जो डिवेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है और आपका अल्टीमेट थॉट ये है कि भी मेरे को इससे जो पैसा लेना है वो एज पर द टर्म्स ऑफ द डिवेंचर्स और बॉन्ड्स वापस इससे पैसा लेना है। जब आपने इसको इन्वेस्ट किया है तब आपको ये पता, जब आपका ये इंटेंशन, और ये इंटेंशन ऐसा बिजनेस को देखते हुए भी कई बार होता है ना। जैसे हम आज इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके के होते हैं जो दे आर बेसिकली लाइक पॉलिसी होल्डर्स फंड, एंड कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं which are being taken as the shareholders fund. अब जो पॉलिसी होल्डर फंड्स हैं, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया अंडर बिजनेस मॉडल टेस्ट कि मैंने ये वाले सेग्रीगेट किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी होल्डर फंड। तो मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया तो मतलब एज एंड व्हेन एनी क्लेम इज देयर एंड आई हैव टू सेटल दोस क्लेम्स, सिंस इट इज ए पॉलिसी होल्डर फंड्स, आई कैन सेल इट टू सेटल दोस पॉलिसी होल्डर्स क्लेम। ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस मॉडल टेस्ट के अंदर क्या आया यहाँ पे? इज इट टू होल्ड? इट इज टू सेल। जबकि उसकी जगह कोई कहता है कि साहब ये तो शेयर होल्डर्स फंड है। तो शेयर होल्डर्स फंड कब लिक्विडेट होता है? जब लास्ट में जाके, तो वो बेसिकली दैट इज फॉर होल्ड। कई बार आपको जरूरी नहीं, एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या है? What does the investment policy of the company says
जो भी अकाउंटिंग एंटिटी है उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या कहती है, या जब वो इन्वेस्टमेंट आपने किए तब आपने क्या डिसीजन लिया। और अगर ऐसा वहां नहीं होता तो देन वी नीड टू आस्क सर ये अल्टीमेटली आपका इसमें पर्पस क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप बीच में इसको जरूर कर दोगे आप। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको आपने शुरू के अंदर ऐसा कुछ अज्यूम किया कि भाई ये हम इसको लास्ट में जब मैच्योर होएगा तभी हम इसका रिपेमेंट लेंगे। तो दिस डजंट मीन दैट देयर इज एनी प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ दोज एसेट्स। इसका मतलब ये नहीं है, आप बीच में सेल कर सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट व्हाट वाज योर इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। Next, we'll discuss about the investment in derivative instruments. नहीं आगे क्या डिस्कस किया फिर आपने वो। Amortized cost और FPT से FPTPL. तो ये जो दोनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं, होल्ड कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड देयर इज जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। तो जो डेट्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उसमें स्पेसिफाइड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने कोई इक्विटी में इंस्ट्रूमेंट्स में आपने कोई पैसा दे दिया तो देयर इज नो स्पेसिफाइड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो वो यहाँ नहीं आएगा। वो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट क्लासिफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। और ये सेटिस्फाई नहीं है तो आप एफपीटीआई एफपीटी ओसीआई कब ले सकते हो, जब सेल का कैश फ्लो भी लेना है और सेल भी कर सकते हैं अगर प्राइस हाइक हो सकती है। then you can actually classify it as FPT. FPTOCA. Intention to collect principal interest is same in both the sectors. And FPTL is residual category. That is the entity plus option है कि वो उसको FPTOCA पे क्लासिफाई ना करके FPTPL पे क्लासिफाई कर दो यदि उससे अकाउंटिंग फीस कम होता है। जैसा कि अपन ने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि दोनों इंस्ट्रूमेंट की रेट इंटरेस्ट रेट सेम है, अगर आप उनको फाइनेंशियल इसमें ऑफसेटिंग करके दिखाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रिलेवेंट होंगे अपन में। Investment in derivative instruments. Investment in derivative instruments are always deemed to be held for trading. क्योंकि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कभी हेल्ड के लिए नहीं होते हैं, हमेशा अपन उन पर ट्रेडिंग ही करते हैं, तो हमेशा उनको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग माना जाता है। तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो उसका क्लासिफिकेशन कहाँ होगा, तो जो भी आपका फेयर वैल्यू सॉरी डेरिवेटिव कोई एसेट और लायबिलिटी है दैट विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड टू एफपीटीपीएल। अब अपन जितना भी अपन ने फाइनेंशियल का क्लासिफिकेशन देखा उसको अपन एक समराइज चार्ट से डिस्कस करते हैं। यदि एंटिटी की असेट्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है और एंटिटी का इंटेंशन उसको ट्रेड करना नहीं है तो एंटिटी के पास एक इररिवोकेबल चॉइस है कि उसको एफपीटी ओसीए पे दिखा सकती है, और एंटिटी का ऑप्शन है कि उसमें वो सेल ट्रेडिंग करेगी तो उसको एफपीटीपीएल पे दिखाएगी। और अपन ने देखा कि जैसे हैज द एंटिटी इलेक्टेड द ओसीए ऑप्शन, अगर एंटिटी ने इररिवोकेबल ऑप्शन नहीं किया कि उसको अगर एफपीटी शुरू में तो एफपीटी ओसीए दिखा दिया और बाद में एफपीटीपीएल दिखाएंगे तो वैसा करना अलाउ नहीं है। यदि एक बार आपने एफपीटी ओसीए में क्लासिफाई कर दिया तो आप उसको दोबारा एफपीटीपीएल में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो जो आप अगर आपने इररिवोकेबल ऑप्शन चूज किया तो एफपीटीओ से, अगर इररिवोकेबल ऑप्शन चूज नहीं किया तो उसको एफपीटीपीएल में दिखाना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्कस करते हैं। अगर एंटिटी का इंटेंशन कैश फ्लो सोल्डी पेमेंट और प्रिंसिपल इन इंटरेस्ट है और एंटिटी का बिजनेस मॉडल ओनली उसको होल्ड करना है तो उसको अपन अमोर्टाइज कॉस्ट में दिखाएंगे, और अगर उसका उसमें ट्रेड करना भी है तो उसको अपन एफपीटीओसी पे दिखाएंगे। अपन उसको फिर एफपीटी पे भी दिखा सकते हैं यदि एंटिटी का उसको एफपीटी पे दिखाने से अकाउंटिंग एक्सपेंस कम होता है तो। और इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड एज एफपीटीपीएल। अच्छा, ये जनरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो मैटर है वो आपको अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज में तो जनरली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, लेकिन अगर अपन देखते हैं बैंक्स की साइज देखते हैं, बैंक्स के अंदर अगर अपन टोटल पोर्टफोलियो देखते हैं तो करीब 33% जो पोर्टफोलियो है बैंक का, जो टोटल एसेट साइज है दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज ट्रेजरी। तो टोटल एसेट साइज होता है उसका 33% करीब जो है वो ट्रेजरी होता है। तो उन सब के ऊपर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड लगता है, और डेफिनेटली जो लोन दे रखे होते हैं उस पर भी लगता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड।
तो बैंक का तो ऑलमोस्ट सारा 100% असेट साइड है, असेट साइड इज कवर्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी आपने वो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, देन यू हैव टू अगेन सी दैट व्हाट इज द board policy which is there, and that board policy is also again governed by the RBI's circular। RBI के जितने भी सर्कुलर्स होते हैं उससे वो गवर्न होती है। तो कई सारी चीजें आरबीआई में ये होता है कि साहब आपको इतना एसएलआर मेंटेन करना है, नेचुरल लिक्विडिटी रिजर्व मेंटेन करना है, या इतना ये सारी आपको और दूसरी कंडीशन मेंटेन करना है। तो टू मेंटेन दोज कंडीशंस देन अगेन दे हैव टू फॉर्म ए पॉलिसी। तो अब वो पॉलिसी के तहत फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि साहब ये कितने एसेट्स तो इन्होंने एज ए फिक्स्ड मैच्योरिटी तक इनको रखने कंपल्सरी है, होल्डिंग पीरियड तक रखने कंपल्सरी है। तो आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली हो सकता है। Next is classification of financial liabilities. All financial liabilities are always classified as amortized cost, except certain circumstances. यदि अपन ने फाइनेंशियल लायबिलिटी को एफपीटी पे क्लासिफाई किया है तो अपन उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई नहीं करेंगे। अब एफपीटी पे अपन कब क्लासिफाई करेंगे, जब अपना इंडेंजर्स में ट्रेड करना है और एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को अपन फाइनेंशियल लायबिलिटी में अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर डील्ड विद इंड एस 104 and commitments to provide a loan at below market interest rate are also not covered under amortized cost. Financial liability that are designated as hedge items are subject to hedge accounting requirement. Classification of financial liabilities assumed in business combination. When financial liabilities are assumed in a business combination, those liabilities should be classified in the consolidated financial statements of the acquirer into one of the permitted categories mentioned above, that is amortized cost or FTPL. It is entirely possible that classification of financial liability for this purpose may differ from its classification in the financial statement of the acquiring. यानी कि एक्वायरर और एक्वायरी की बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है कि उसने उसको एफईटी पे क्लासिफाई किया हो या अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई किया हो। फॉर एग्जांपल, द एक्वायरिंग यूज्ड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट may choose to designate financial liabilities as FVTPL at initial recognition, even though the acquiring may have it classified it otherwise. That is the amortized cost. When it is first recognized the liability, these differences can arise because the initial recognition from the acquirer's perspective is the date of acquisition of the subsidiary and its classification decision are made at the date. यानी अपन उसको amortized को FVTPL किस कैटेगरी पे क्लासिफाई करेंगे, एक्वायरर पे डिपेंड करता है, एक्वायरी पे डिपेंड नहीं करता। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, गेन्स एंड लॉसेस एंड अदर आइटम्स, जो अपन को जैसे अपन ने इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देखा, डेट इंस्ट्रूमेंट देखा, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट देखा, उन पे जो अपन को इंटरेस्ट होता है या फेयर वैल्यू चेंजेस होता है उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स एंड लॉसेस एंड गेन्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल लायबिलिटी और टू अ कंपोनेंट और a compound instrument that is financial liability are recognized in the income of or expenses P&L account, that is FVTPL. Distributors to holders of equity instruments should be recognized by the entity directly in the equity. और सिमिलरली ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ट्रांजेक्शन आर अकाउंटेड इन द डिडक्शन फ्रॉम इक्विटी। यानी अपन ने कोई भी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उनको इक्विटी में क्लासिफाई करेंगे और कोई उसके बदले अपनी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी तो उसको अपन इक्विटी में से लेस करके दिखाएंगे। और जो भी इस पे जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड थिंग्स है वो इंड एस 1 to 12 डील करता है, देखिए इनकम टैक्सेस। क्या समझे ये चारों पॉइंट से? व्हाट इज थर्ड पॉइंट? जब भी आप कोई इक्विटी इश्यू कर रहे हो तो इक्विटी इश्यू करने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो कहाँ जाएगी? वो इक्विटी से में ही माइनस होगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख शेयर कैपिटल इश्यू किए एट द रेट ऑफ ₹10, है ना, और उसको आपको लेने के लिए 10,000 रुपए आपने खर्चा किया, तो आपका क्या शेयर कैपिटल 9,90,000 होगा? आपका जो शेयर कैपिटल है वो आप, क्योंकि नहीं तो को कंपनी लॉ से मिसमैच हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपका 10 लाख होगा, बट जो 10,000 रुपए है वो जो आपके दूसरे कैपिटल रिजर्व्स हैं कुछ, उसमें से आपको माइनस करके बताना होगा।
What is the disclosure requirements about the financial इससे instrument? पहले भी तो एक स्लाइड थी, क्या हुआ भूल गए उसमें? नहीं, वो इंटरेस्ट पेमेंट को डिविडेंड का था कि वो अच्छा, क्लासेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर क्या क्या रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल एसेट के बारे में। अपन को एक तो क्लासेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये या तो फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है। उसमें अपन को बाय डिटरमाइनिंग द क्लास ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपन को ये देखना पड़ेगा कि उसको अपन ने अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई किया है, एफईटी पे क्लासिफाई किया है, यानी सबको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। और एंटिटी का उसके बारे में जजमेंट क्या है, उसको होल्ड करना है, उसको ट्रेड करना है, हाउ मच रिजल्ट शुड बी प्रोवाइडेड, हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, हाउ इंफॉर्मेशन शुड बी एग्रीगेटेड टू डिस्प्ले द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द एंटिटी। अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जो अपन को कहाँ डिस्क्लोज करने पड़ेंगे? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी अपन क्या क्या जो एफईटी पे दिखाई है उस पर अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। एक तो नेचर ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, एक उसका क्राइटेरिया क्या है, एक हाउ एंटिटी उसको से हाउ एंटिटी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सच डेजिग्नेशन, यानी कि आप उसको एफईटी पे क्लासिफाई किया या अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई किया, एंटिटी उस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई किया। और फाइनेंशियल एसेट्स को अपन एफईटी पे अगर जिन फाइनेंशियल एसेट्स को अपन ने एफईटी पे क्लासिफाई किया है उसको अपन क्या कहते हैं कि उसका नेचर क्या है फाइनेंशियल एसेट्स का, और हाउ एंटिटीज को क्राइटेरिया कैसे सेटिस्फाई किया कि वो होल्ड के लिए है या ट्रेड करने के लिए। तो ये देखिए, ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने होते हैं। जैसे इन्होंने लिखा कि फॉर ऑल लायबिलिटीज द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज द एंटिटी हैज designated and fair value to profit and loss, the criteria for so designing such financial liabilities on initial recognition, and how the entity satisfied the conditions for such designations. तो कई बार ये आता है कि साहब जो भी डिस्क्लोजर्स, सॉरी जो भी इंडेक्स में क्लासिफिकेशन, जो भी इंडेक्स में अपन मेजरमेंट करते हैं वो हम फेयर वैल्यू पे करते हैं या अमोर्टाइज कॉस्ट पे करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि इससे लोग अपनी विंडो ड्रेसिंग करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। तो कभी वो किसी और मेथड से को कर देवे, कभी किसी दूसरे मेथड से उसको करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। whatever decisions one is taking for the purpose of any classification of the financial instruments, those are required to be disclosed in the financial standard, in the financial statement. तो अगर आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप उसको फिर चेंज ही करते रहो। Once you have adopted something, once you have taken certain measurement on some basis, that will be continued for over a subsequent period also, जब तक कि कुछ रिक्लासिफिकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो जाए। तो ये इंडेक्स के अंदर आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव कवर्ड द रिक्लासिफिकेशन, यू हैव कवर्ड। तो देन देयर आर सर्टेन रिक्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में आप ये जो क्लासिफिकेशन पहले किया है ना, चाहे वो अमोर्टाइज कॉस्ट का हो, चाहे वो फेयर वैल्यू प्रॉफिट लॉस का हो, या वो एफईटी ओसीआई हो, in what circumstances one can reclassify those financial into some other category, और वो जिस दिन भी रिक्लासिफिकेशन होता है उस दिन आपका उसको फेयर वैल्यू करना होता है, and then whatever is the difference that is charged to the profit and loss. So these reclassification criteria principle are also there in this standard. Yes. Now my friend Tikendra will continue and discuss about the BMT test and contractual cash flow test in detail. फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद इंडिया 2009 क्या बताता है कि फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के 3 क्राइटेरिया हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफडीओसीआई और एफटीपीओ। अमोर्टाइज कॉस्ट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और पी इनकम। तो हर 3 कैटेगरी में कुछ क्राइटेरिया और टेस्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर वो टेस्ट मीट आउट होते हैं तो अपन उसको उसी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अमोर्टाइज कॉस्ट में 2 टेस्ट हैं, टेस्ट में होल्ड टू कलेक्ट और सेकंड है एफटीपीओ। एफडीओसीआई में कौन सा है? होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल एंड एफटीपीओ। एफटीपीओ टेस्ट दोनों में कॉमन है। अमोर्टाइज कॉस्ट में होल्ड टू कलेक्ट है और ओसीआई में कलेक्ट एंड सेल है। कलेक्ट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ऑप्शंस आर देयर। आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इसको लास्ट में जाके कलेक्ट, आप बीच में भी उसको सेल,
और थर्ड कैटेगरी पी एंड एल, उसमें क्या है जो दोनों में क्लासिफाई नहीं हो रहा वो पी एंड एल में जाएगा, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में पी एंड एल में जाएगा। तो अमोर्टाइज में दो थे अपने, होल्ड टू कलेक्ट और एफसीपीआई। पहले अपन एफसीपीआई टैक्स देख रहे हैं। एफसीपीआई स्टैंड्स फॉर सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसको अपन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। Within Ind AS 109, financial instruments requires an entity to classify a financial asset on the basis of its contractual cash flow characteristics. If the financial asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flow, or within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flow and selling the financial asset. First वाले में hold to collect है, amortized cost में जाएगा। Second वाले में collect है as well as sell है। मेजरमेंट थोड़ी डिस्कस कर। और इसके लिए एफसीपीआई में सबसे मेन क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देखना है कि जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एलिमेंट होना चाहिए। इसके लिए अपन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स एट इनिशियल डिटरमिनेशन। However, that principal amount may change over the life of the financial assets. For example, if they are repayments of principal. Principal जिस amount आप initially recognition कर रहे हो फाइनेंशियल असेट्स का, whether by amortize or OCI या P&L, इसको डिस्काउंटिंग करके लेके आ रहे हो अपने बुक्स में, तो प्रिंसिपल अमाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो। An entity should assess whether contractual cash flow or solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding for the currency in which the financial asset is denominated. वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अपने कैश फ्लो होने चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। Now what is interest? Contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding are consistent with a basic lending arrangement. An originated or a purchased financial asset can be a basic lending arrangement irrespective of whether it is a loan in its legal form. Now interest क्या होना चाहिए, जो अपने नॉर्मल मार्केट पैरलेंस में जनरल टर्म्स में जो इंटरेस्ट होता है बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट में, वो उससे मैच होना चाहिए। अपन इंटरेस्ट इसलिए दे रहे हैं किसी को कि एक तो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर हो जाए, अदर रिस्क कवर हो जाए, बेसिक लैंडिंग रिस्क होती है, और एक अपना प्रॉफिट मार्जिन भी होती है। ये बेसिक अरेंजमेंट में ये तीन चीजें होती है अपने इंटरेस्ट के अंदर। तो इसके अलावा कोई और फोर्थ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, second one is basic lending risk, other costs like administrative costs associated with holding the financial asset for a particular period of time, and profit margin. अब मान लो हमारी फाइनेंशियल एसेट ऐसी है जो कि which is exposure to risk और volatility in the contractual cash flow, जैसे कि मैंने ऐसे फाइनेंशियल एसेट में अपना कॉन्ट्रैक्ट है कि इंटरेस्ट जो है वो निफ्टी की परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा। तो क्या ये जनरल मार्केट टर्म्स स्पेसिफाई कर रहा है क्या निफ्टी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ चलता है? चलता है। तो ये सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं, एफसीपीआई टैक्स फुलफिल नहीं होगा। Leverage is the contractual cash flow characteristic of some financial asset that increases the variability of the contractual cash flow with the result that it do not have economic characteristics of the interest. प्रीवियस क्लास में आपने ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर्स पढ़े थे, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें क्या वेरिएबिलिटी आती है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो में? क्या अपने पास हर डेट को स्पेसिफाइड एक प्रिंसिपल इंटरेस्ट थोड़ी आता है, नहीं आता। तो अगर इस केस में अगर वेरिएबिलिटी बहुत आ रही है तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब एफसीपीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, और एफसीपीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई होगा? क्योंकि ओसीआई और अमोर्टाइज में दोनों एफसीपीआई टेस्ट को मानता है, तो वो एफसीपीआई में जाता है। इंटरेस्ट का वही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिक लैंडिंग रिस्क प्लस प्रॉफिट मार्जिन एंड क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट प्रोवाइड्स कंसिडरेशन ओनली फॉर द पासेज ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर अदर रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद होल्डिंग द फाइनेंशियल असेट्स। बस तुम्हें पासेज ऑफ टाइम में जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसको कवर अप करके चलो, उसके अलावा और कुछ नहीं होना। एग्जांपल है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट where this rate consists of consideration for time value of money, credit risk, and other basic lending risk. This interest rate only provides the lender with a return through interest on present market factors similar to one on a basic lending arrangement. Of interest, whether it is variable interest rate or floating interest rate or fixed interest rate, as long as तुम्हारी time value of money को credit risk को cover कर रही है, तो एफसीपीआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है। वेरिएबल फ्लोटिंग सब चलता है, टाइम वैल्यू मनी कवर होना चाहिए। Second is a contractual term that permits the issuer to repay a debt instrument before maturity and the prepayment amount substantially represents unpaid amounts of principal and interest on the principal amount outstanding,
which may include reasonable additional compensation for early termination of the contract. जैसे मैंने लोन लिया है 5 साल का, मैं 3 साल बाद इसको प्रीपेमेंट कर रहा हूँ। 3 साल बाद जब मैं प्रीपे कर रहा हूँ तो 3 साल तक के सारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसे पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आप उसको 2 साल के पे कर रहे हैं 1 साल तक, 3 साल तक का आपने पे कर दिया तो मतलब उसमें एसपीपी टैक्स फुलफिल हो रहा है क्योंकि आपने सारा उसको इंटरेस्ट दे दिया है। A contractual term that permits the issuer or the holder to extend the contractual term of that instrument and terms of the extension of the result in contractual cash flow during the extension period at a solely payment of principal and interest. तो ऐसा होता है क्या होगा, अभी तो प्रीपे कर दिया, मैंने कहा 5 साल के बाद में गया कि 3 साल और एक्सटेंड कर दो। अगर 3 साल और एक्सटेंड कर दिया तो भी आपको चेक करना है तुम 3 साल में क्या हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं ऑन स्पेसिफाइड डेट रिसीव हो रहे हैं, अगर सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हैं तो टैक्स फुलफिल हो रहा है। Question 1. Instrument A is a bond with stated maturity date. Payment of principal and interest on the principal amount outstanding are linked to an inflation index of the currency when the instrument is issued. The inflation link is not leveraged and the principal is protected. पूरे inflation अपना टाइम वैल्यू फंड को लेके चलता है। पर इधर भी पूछते किसी को। अपूर्व गुप्ता, अपूर्वा। यस सर। सर इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स तो टाइम वैल्यू मनी से रिलेटेड है तो एसपीआई टैक्स मीट हो रहा है। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। इंटरेस्ट रेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट रियल इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है नॉमिनल अमाउंट। Illustration 2. Instrument F is a bond that is convertible into a fixed number of equity instruments of the issuer. Analyze the nature of cash flow. अनमोल गोयल। अनमोल गोयल। यस सर। सर इसमें एसपीबीआई फुलफिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रीजन क्या है? सर वो सर इसमें वो वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो रिटर्न से लिंक नहीं है। शेयर्स की वैल्यू सेम नहीं रहती है। शेयर्स की वैल्यू आज स्टॉक मार्केट में कोई शेयर लिस्ट है तो उसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है क्या? चेंज होती रहती है ना, हर सेकंड चेंज होती है, तो उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एलिमेंट तो नहीं आ रहा उसमें, तो एसपीपी टैक्स नेट नहीं होगा। Holder would analyze the convertible bond is entirety. The contractual cash flows are not payment of principal and interest on the principal amount outstanding. They reflect a return that is inconsistent with the basic lending rule. Question 3. Instrument F is a perpetual instrument, but the issuer may call the instrument at any point and pay the holder the par amount plus accrued interest due. Instrument X pays the market interest rate, but payment of interest cannot be made unless the issuer is able to remain solvent immediately afterward. Deferred interest does not accrue additional interest. हर्षिता। हर्षिता हो क्या आप वहाँ पे? यस सर। ये समझा आपने क्या सवाल है? जतिन अग्रवाल। हेलो। हाँ जतिन। हाँ सर, इसमें ये कि क्योंकि ये परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है तो इसलिए इसमें क्या होगा कि क्योंकि लोन चलता जा रहा है और जब वो चाहे तो अपने ऑप्शन पे वो प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर देगा, लेकिन वो जब पेमेंट करेगा तो उसमें टाइम वैल्यू मनी कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक टाइप से एक होल्डिंग अगर सब्सिडी को लोन देता है और वो अगर चल रहा है परपेचुअल है तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं आ जाता है, उसमें इक्विटी एलिमेंट आ जाता है और सोली फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं है ये। तब
SPPI टेस्ट मीट नहीं करेगा सर। क्या कहते हैं, तो एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं करेगा, बट जो मेन रीजन है एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं करने का वो ये है कि अगर इश्यूअर सॉल्वेंट रहता है तो उसे टाइम पे इंटरेस्ट मिलेगा। पर इश्यूअर सॉल्वेंट नहीं रह रहा है तो इंटरेस्ट बाद में मिलेगा, पर जो बाद में इंटरेस्ट मिल रहा है क्या उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है? उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं है। क्वेश्चन में लिख रहा है डेफर्ड इंटरेस्ट डज नॉट एग्री ऑन द एडिशनल इंटरेस्ट, additional interest does not agree on the deferred interest. Interest amount are not consideration for the time value of money. In case if interest accrued on the deferred amount, the contractual cash flow could be payment of principal and interest on the principal amount also. और एक्चुअली हो रहा है तो अपने क्राइटेरिया फुलफिल होगा। Fourth, instrument G is the loan that pays an inverse floating interest rate. That is, the interest rate has an inverse relationship to the market interest rate. Analyze the interest rate. मार्केट रेट ऊपर जा रही है, मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है, मार्केट रेट कम हो रही है, मेरा बढ़ रहा है, मार्केट कब तक कहाँ चल रहा है? It is unlike a basic lending arrangement, in which the return which may be higher or lower to the market rate of interest, and they do not represent contractual cash flow. Section 5. ABC Limited issued a 10 crore loan to PQR Limited. Interest is payable by PQR on the loan based on its own performance, and at the rate 75% of the annual growth. चिराग गुप्ता, क्या हुआ चिराग, सो गए क्या? हेलो हाँ बताओ। सर। सर इसमें है ना वोलेटिलिटी हो रही है तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कंप्लीटली तरीके से नहीं मिल सकता, इसलिए एसबीपीआई टेस्ट पास नहीं करेगा। तो ये चिराग पहले बताया था, अगर कैश फ्लो आपकी किसी वॉलेटिलिटी और रिस्क से इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, 75% हो गया ना, और मेरा कम हो रहा है परफॉर्मेंस तो इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो उसमें एसपीपीआई टेस्ट करना फुलफिल नहीं होगा। ऑनलाइन पार्टिसिपेशन के आंसर सुन के ऐसा लग रहा है कि सब लोग सुन रहे हो आप। Exposure to risk or volatility in the contractual cash flow that is unrelated to a basic lending arrangement, and it doesn't meet the SPPI test. 6. PF Limited issued rupees 5 crore loan to RST Limited. Interest is payable by RST on the based on Nifty performance. Interest is determined as equal to percentage growth in Nifty. अभी डिस्कस करा मैंने निफ्टी वाले, नहीं होगा इसमें। Exposure to risk or volatility वाला रीजन आएगा इसमें। Entity A Limited lends Entity B 5 million for 10 years subject to following. Interest is based on the prevailing variable market. Interest is capped at 10% and repayable in 10 years. हो जाएगा। हो जाएगा। वो मीटिंग नहीं होगा। As long as हमने टाइम वैल्यू कंसीडर कर रहा है वो 10% ही तो मीट होगा। As long as interest reflects consideration for the time value of money and credit risk and other costs, SPPI test मीट होगा। आप इन्फ्लेशन का देखो वो क्या चल रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट उससे मैच हो रही है तो 10 years का टाइम है तो हमें पता नहीं 10% हो जाएगा। बैलेंस रिपोर्टिंग डेट पे देखो क्या चल कंडीशन में, तो उस तरह से देखो। Next topic is modified time value of money. The time value of money may be imperfect. Sometimes this happens when the frequency of the interest rate. ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का किसी का कोई सवाल है? Interest rate that is reset periodically does not measure the tenure of the interest. For example, when the quarterly premium figure is used as the interest rate reset should happen every 3 months. If on the other hand the interest rate reset happens on a monthly basis, this would result in mismatch between the frequency of the rate reset and the tenure of the instrument. Only financial asset, उसमें कंडीशन ये है कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट मैं चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करता हूँ? लिबर को ध्यान में रखते हुए। लिबर सबको पता है, लंदन इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, लंदन में लिबर निकालता है वो हर 3 मंथ 1 मंथ की रेट निकालता है, पब्लिश करता है।
इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हैं ओवरऑल ग्रोथ के साथ। तो अगर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट रीसेट हो रहा है तो मेरे को इंटरेस्ट रेट भी 3 महीने की लेनी चाहिए। अब मैं 3 महीने की इंटरेस्ट रेट 3 महीने में रीसेट कर रहा हूँ और इंटरेस्ट ले रहा हूँ 1 महीने की, तो वो गलत हो गया, मिसमैच आएगा उसमें। तो मान लो 1 महीने में रीसेट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ले रहा हूँ 3 महीने की, तो इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से डिसाइड होती है, 3 महीने के हिसाब से हो रही है 1 महीने के हिसाब से हो रही है। तो इसमें आपका एससीपीआई टेस्ट में फिर प्रॉब्लम आती है अगर ऐसा है, सच मिसमैच अपर्स। Entity assess the impact of such mismatch to determine if the contractual cash flow represents principal and interest. The standard suggests that where the entity is unable to determine the impact of such mismatch by performing a qualitative assessment, the entity should perform a quantitative assessment. इसमें entity को quantitative assessment perform करना पड़ेगा। उसमें क्या करेगी entity? जो modified है अपनी 1 month और 3 month वाली, उसके cash flows और जो unmodified थी 1 month 1 month वाली, तो दोनों को कंपेयर करेगी, दोनों के कैश फ्लो। अब अगर दोनों के कैश फ्लोज में डिफरेंस आ रहा है, मान लो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो अपना टेस्ट मीट नहीं होता। पर डिफरेंस ऐसा इनसिग्निफिकेंट 1 मंथ 3 मंथ और 1 मंथ 1 मंथ वाले, तो अपना टेस्ट मीट कर जाएगा। The contractual cash flow based on the modified variable of money element would be compared with the contractual cash flow that arise based on unmodified. If the financial asset under assessment contains a variable interest rate that is reset every month to a 1-year interest rate, the entity would compare that financial asset to an instrument with identical contractual terms and identical credit risk, except the variable interest rate is reset monthly to a 1 year. 1 month का होना चाहिए. If the modified time value of money results in cash flows that are significantly different from the benchmark cash flow, asset does not meet the SCPI test. ये उसका टेस्ट है modified time value of money का. And discounted contractual cash flow compare करना है cash flows if the element was not modified. And if the difference is significant, criteria is not met. AMC और FBO में दो टेस्ट है, एक तो हेल्प टू कलेक्ट और हेल्प टू कलेक्ट एंड सेल और HCPI दोनों में कॉमन था, HCPI हो गया। सेकंड टेस्ट है बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है? Following factors shall be considered for determining the business model. Business model does not depend on the management's intention and ability for an individual instrument, and it should not be determined on the basis of an instrument to instrument basis. अब बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा नहीं है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट पे लगाना है। अगर आपकी एंटिटी में कुछ पोर्टफोलियोज हैं, उन पोर्टफोलियोज पे पूरा लगा के देखो उसको। ये 10 इंस्ट्रूमेंट है तो 10 इंस्ट्रूमेंट पे लगा दो बार। अगर 10 इंस्ट्रूमेंट है जैसे 5-5 का 2 पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो लेवल पे चेक करो उसको। That should be performed at the portfolio or sub-portfolio level that is an entity में purchase. High level of aggregation does not mean that the test should be performed at the entity level. The test should be performed at the portfolio or sub-portfolio investment level. An entity may purchase portfolio of mortgage loans with the objective of collecting capital, another portfolio with the objective of selling them. कुछ पोर्टफोलियो हो सकता है आप सिर्फ कैश फ्लो कलेक्ट करने के लिए रखते हो और कुछ उनको कैश फ्लो चाहिए मुझे सेल भी कर सकता है। एक एंटिटी के एक से ज्यादा पोर्टफोलियो बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, बताया कुछ सेल करने के लिए, कुछ सेल और कलेक्ट करने। Where entity manages its financial asset to generate cash determines the business model of the entity. Entity may generate cash flow either by collecting cash flow or selling the financial asset. Entity may sell some financial asset when it is hard pressed for cash during a stress situation, and such a scenario would not affect entity's assessment of the business model. मान लो मेरा कोई फाइनेंशियल asset है, उसका मेरा बिजनेस मॉडल का मुझे उससे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना है, बट मेरे बिजनेस में लिक्विडिटी क्राइसिस है, मैंने इसको बेच दिया, सेल कर दिया। ऐसे केसेस को कंसीडर नहीं करना है अपन को देखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो एक्सेप्शंस में अपन तो पड़ जाएगा हेल्प टू कलेक्ट जाएगा। Financial assets that are held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows or manage to realize cash flows or collecting payment over the life of the instrument. There must be intention and ability to hold the financial assets. तो यहाँ पे
एक चीज ध्यान रखना कि इंटेंशन होने चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। अगर दो चीज है ना मेरे पास, तो वो फाइनेंशियल एसेट हेल्प टू कनेक्ट में जाएगी। तो मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने एक फाइनेंशियल एसेट चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपए सारा कैश बैंक मिला, तो मैं 1 लाख रुपए से फाइनेंशियल एसेट ले ली, ठीक है, पूरा पैसा उसमें लगा दिया 1 हफ्ते और मेरे पास अब कुछ कैश बैंक नहीं होता। अगले दिन और मैं कह रहा हूँ मेरा इंटेंशन है इसको मैं मैक्सिमम तक होल्ड करूंगा, ठीक है। अगले दिन क्रेडिटर्स आते हैं मेरे पास पेमेंट मांगते हैं, कहाँ से पेमेंट दूंगा, कैश और बैंक तो है नहीं, और इंटेंशन मेरा मैच्योरिटी तक होल्ड करने का सेल करना पड़ेगा। इंटेंशन तो था मेरा पर एबिलिटी थी मेरे पास। इंटेंशन और एबिलिटी जब तक दोनों वीकली होंगे ना, हेल्प टू कलेक्ट करना सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। In determining whether cash flows are going to be realized by collecting the financial assets cash flow, consider the frequency, value and timing of sales in criteria, the reason for sales and expectation about future sales activity. अब आपको अपना बिजनेस मॉडल डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए आप देखो कि आपका बिजनेस में लिक्विडिटी कंडीशन क्या है, आपकी सेल्स क्या हो रही है, पास्ट में सेल्स क्या हुई है, या प्रोजेक्टेड सेल्स क्या है, फ्यूचर क्या हो सकती है, आपके क्रेडिटर्स क्या है, डेटर्स क्या, ओवरऑल बिजनेस का मॉडल क्या है, उस अकॉर्डिंग आप अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करोगे बिजनेस मॉडल टेस्ट करोगे। Although the objective of an entity's business model may be to hold the financial assets in order to collect cash flows, the entity need not hold all of the instruments until maturity. An entity business model can be to hold financial assets to collect cash flows, even when sales of financial assets occur or are expected to occur in the future. तो मेरा फाइनेंशियल एसेट्स का मॉडल था हेल्प टू कलेक्ट वाला, बट वो असेट की आज क्रेडिट रिस्क इतनी बढ़ गई है तो मुझे उसे सेल करना पड़ रहा है, या लिक्विडिटी कंडीशन सही नहीं है बिल्डिंग में तो सेल करना पड़ रहा है। तो इससे मेरा जो इनिशियल डिटर्मिनेशन था उसका हेल्प टू कलेक्ट है वो गलत नहीं है। ऐसी सिनेरियो मैंने बताया कंसिडर नहीं करना है, एक्सेप्शनल केस है। तो अपन अगर इनफ्रीक्वेंट सेल्स हो रही है बीच बीच में तो उससे मॉडल अपना सेटिस्फाई रहेगा। Selling a financial asset because it no longer meets the credit criteria, the entity's documented invested policy is an example of a sale that has occurred due to increase in credit risk. An entity hold investment to collect cash flows. The funding needs of the entity are predictable, and the maturity of the financial asset is matched to the entity's funding needs. Entity performs credit risk management activities with the objective of minimizing credit losses. In the past, sales have typically occurred when the financial asset credit risk has increased, thus where the assets no longer meet the credit criteria in the entity's document policy. In addition, infrequent sales have occurred as a result of unanticipated funding needs. Reports to KMP focus on the credit quality of the financial asset and the contractual terms. The entity also monitors fair value of the financial asset, among other information. Business model. एंटिटी चाह रही है बस उसका फाइनेंस फेयर वैल्यू मॉनिटर कर रही है सेट का, कुछ चेंज करनी है, कुछ नहीं करनी है, बेचनी है। Hold investment to collect contractual cash flow. पहले लाइन में लिख रहा हूँ उसको. Sales would not contradict that objective if they were in response to an increase in the asset's credit risk. तो स्ट्रेस केस सिनेरियो है या फिर आपको बेचना पड़ रहा है असेट को, इसको कंसीडर नहीं करना. बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस एंड नॉट रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ असेट. An entity's business model is to purchase portfolio of financial assets such as loans. Those portfolio may or may not include financial assets that are credit impaired. If payment on the loan is not made on timely basis, entity attempts to realize the cash flow through various means. The entity's objective is to collect the cash flow, and entity does not manage any of the loan in this portfolio with an objective of realizing cash flow by selling them. In some cases, entity enters into interest rate swap to change the interest rate on the particular asset in a portfolio from a floating to a fixed rate interest rate. कौशल गुप्ता. कौशल गुप्ता, are you there? दर्शन. हेलो. हाँ कौशल.
कौशल आपको समझ में आ रहा है क्या सवाल है? दर्शन, हेलो। हाँ बताइए। दर्शन, प्लीज टेल अस। हाँ, आप में कोई नहीं होगा because the intention to hold वो नहीं है इसमें, क्योंकि एंटिटी है ना, जब भी उसके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आएंगे वो उसको बेच सकती है, वो इनिशियल रिकग्निशन पे ही है के एक तरीके से क्राइटेरिया तो नहीं है। मैं कलेक्ट नहीं है उसमें लिखा है एंटिटी तो ऑब्जेक्टिव entity does not manage any of the loan in this portfolio with an objective of realizing cash flow by selling them. entity का इंटेंशन ये है कि उनसे कैसे भी मैच्योरिटी तक पैसा लेना है, कोर्ट को कलेक्ट होना होगा। बट आपने इसको करने की एबिलिटी तो होनी चाहिए। तो अगर इनिशियल रिकग्निशन में ये है कि उसकी एबिलिटी नहीं है, अगर वो उधर ही वहीं पे ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ भी फाइनेंशियल क्रंच आएगा तो उसको सेल करके जो भी उसको मेट कर सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिट, तो फिर वो कैसे होगा? तो पहले तो मैं डेटर्स से सारे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ टाइमली बेसिस पर, अगर पेमेंट नहीं आता तो स्टिल मेरे को लगता है कि नहीं यार इससे तो पैसा नहीं आ रहा, तो फिर मैं देखूंगा सेल करने का सोच। एक बार तो मैं उससे कॉन्टैक्ट करूंगा और इसमें एक और चीज थी, इन सम केसेस द एंटिटी एंटर्स इनटू इंटरेस्ट रेट स्वेप्स, तो इससे अपना बिजनेस मॉडल टैक्स को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एंटिटी अपने फाइनेंशियल एसेट्स के पोर्टफोलियो के लिए कोई डेरिवेटिव्स में एंटर होती है, कुछ भी होती है, तो बिजनेस मॉडल टैक्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। अपन को तो कलेक्टर सेल वाला क्राइटेरिया देखिए। The same analysis would apply when the entity does not expect to receive all of the contractual cash flow. The financial assets are carried unpaid at initial recognition. अगर सारे कैश फ्लोज नहीं भी मिल रहे हैं तो भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस मॉडल टैक्स। Entity B sells goods to customer on credit. Entity B typically offers customer up to 60 days following the delivery of goods to make payment in full. Entity B collects cash in accordance with the contractual cash flow receivable and has no intention to dispose the receivables. No intention to dispose the receivable. Entity B objective is to collect contractual cash flow from receivable and therefore receivable meet the business model. जनरली जो है डेटर्स का होल्ड मेजॉरिटी होता है जो भी 60 डेज या 30 डेज की, जनरली दे आर क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सेकंड मॉडल क्या आता है, होल्ड टू कलेक्ट एंड फॉर सेल, जो कि अपने एसबीओसीआई में अपन चेक करते हैं। इसमें एंटिटी ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय बोथ कलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेलिंग द फाइनेंशियल असेट्स। In this type of business model, the objective of the business model is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets. It may arise when an entity requires funds to manage the everyday liquidity needs, but at the same time, scheme and maintaining a particular interest rate so as to manage the duration of both the asset and liability. Typically, in such a scenario, the entity will both collect cash flows and sell the assets. अब कलेक्ट एंड सेल मॉडल है, तो इसमें क्या एंटिटी का टेंशन रहेगा, तो बस कैश फ्लोज भी आ जाए और अगर लिक्विडिटी नीड हो तो मैं को बेच दूँ। दोनों तरह से एंटिटी चलती है, टेंशन लेते हैं। Restriction 4. An entity anticipates capital expenditure in a few years. It invests its excess cash in short and long-term financial assets so that it can fund the expenditure when the need arises. Many of the financial assets have contractual lives that exceed the anticipated investment period. Entity will hold assets to collect the contractual cash flow, and when an opportunity arises, it will sell the assets to reinvest the cash and financial assets. The manager responsible for the portfolio are remunerated based on the overall return generated by portfolio. होल्ड और सेल है।
It will sell the financial asset to reinvest. अगर अपॉर्चुनिटी दिखी तो बेच देंगे. इंटेंशन ही उसका ही है. Opportunity दिखी तो sell. Objective is achieved by both collecting the cash flows and selling the financial assets. To make decisions on an ongoing basis about whether the collecting contractual cash flows or selling the asset will maximize the return on portfolio until the need arises for invested cash. An entity purchased that instrument for 1 lakh. The instrument paid interest of 6,000 annually and is 10 years to maturity when purchased. The entity intends to hold the asset to collect the contractual cash. Hold to collect, hold to collect. Objective is to hold the asset to collect the cash flows and not to sell the assets. Six. Entity purchased a debt instrument for 1 lakh. The instrument pays interest of 6,000 annually and has 10 years of maturity. The entity intends to own the asset to collect the cash flow. 6 years have passed and the entity is suffering a liquidity crisis and needs to sell the assets to raise funds. Correct. Initial determination में तो मेरा क्या था criteria है. Correct. बाद में need है तो fail का. उसमें नहीं देखना. Sale of financial asset but not expected or initial classification, and there is no retrospective classification in India. So that instrument would still meet the hold to collect business model. Entity has surplus funds Indian rupees 50 million. It has not yet found suitable investment opportunities, so it buys medium-rated, high-quality bonds in order to generate interest income. If a suitable opportunity arises before the maturity, the entity will sell the bonds and use the proceeds for the acquisition of business operations. Rather than investment opportunity, hold to collect and hold to sell. Suitable opportunity is sell. Government bond would not meet the hold to collect, it will meet the hold to collect and sell model. तो मान लो कोई ऐसा asset है जो मेरा कलेक्ट है, मैं कलेक्ट एंड सेल है. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. उसका अपन को कैश फ्लो या प्रिंसिपल इंटरेस्ट आता नहीं, और अपना इंटेंशन भी रहता है कि अपॉर्चुनिटी दिखी तो बेच दो ट्रेडिंग के पर्पज से. तो ना वो अमोर्टाइज कॉस्ट में जाएगी ना ओसीआई में जाएगी. रेसिडुअल बैटरी कौन सी एग्जीक्यूटिव उसमें जाएगी. Financial assets which are held for trading is not held to collect contractual cash flow or to both cash flows and to sell. For all such financial assets, the collection of cash flow is only incidental to achieve the business objective. And such assets are measured at FVTPA. Now, reclassification of financial assets. A financial asset आपने एक बार सबने appropriate category में classify कर ली. अब in case आपका फ्यूचर में कोई टैक्स फुलफिल नहीं हो रहा, आपका इंटेंशन चेंज हो रहा है, तो आप उसको टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड पे रिक्लासिफाई करना चाह रहे हो. उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो मान लो पहले आपने एएमसी पे क्लासिफाई कर रखा था और आप उसको पीएनएल में क्लासिफाई करना चाहते हो. अब क्या करेंगे? जिस दिन रिक्लासिफाई करें उस दिन उसकी फेयर वैल्यू मेजर करेंगे और जो प्रीवियस कैरिंग अमाउंट था और जो फेयर वैल्यू है जो डिफरेंस है आ जाएगा पीएनएल में. एएमसी से अपन ओसीआई में लगा रहे हैं. एएमसी में था कैरिंग अमाउंट है. आप reclassification date को But when reclassification is possible, अगर उसका it is only based on the intentions which are being changed or something. क्लासिफाई तो टेस्ट करना बिजनेस मॉडल का ऐसा कैश फ्लो वाला टेस्ट में स्पेसिफाई नहीं होगा तो उसका फिर क्लासिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा. और अगर ओसीआई में लेके जा रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और डिफरेंस ओसीआई. पीएनएल से एमसी है तो पीएनएल में क्या होता है? फेयर वैल्यू पे होता है. फेयर वैल्यू लास्ट है, फेयर वैल्यू पे होता है. और अब एएमसी में लेके जा रहे हैं अब तक फेयर वैल्यू पे आता ही आ रहा है. तो एएमसी में भी उसी न्यू कैरिंग अमाउंट पे आएगा, वही उसका कैरिंग अमाउंट बना. तो डिफरेंस तो रहा है दो भाई. ओसीआई से एएमसी में जा रहा है, अब तक फेयर वैल्यू पे आ रहा था, अभी भी वही न्यू कैरिंग अमाउंट बनेगा उसका. डिफरेंस तो राइट होगा नहीं. तो ओसीआई के केस में क्या होता है कि जो भी अपने गेन्स और लॉसेज आते हैं वो अपन ओसीआई में रिकॉग्नाइज करते हैं, पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं करते. तो अब मैं उसको एएमसी में लेके जा रहा हूँ. ओसीआई में जो भी गेन्स और लॉसेज क्यूमुलेट हो गए होंगे ना उसको मैं असेट की कॉस्ट में एडजस्ट करूँ. तो मेरी असेट थी 1 लाख की और फेयर वैल्यू करते करते हुआ 1,05,000 की आ रही है. तो 5,000 रुपये मेरे ओसीआई में आ रहा होगा और असेट मेरी 1,05,000 की आ रही है. तो मैं रिक्लासिफिकेशन को क्या करूंगा? 1,05,000 के सेट को 1 लाख पे लेके आऊंगा. उसको रिक्लासिफाई करूंगा ओसीआई को असेट की कॉस्ट और वो असेट मेरी उसी पर रिफ्लेक्ट होगी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू. अब मैं उस पर एएमसी लगाऊंगा
तो एमसी से आगे डिस्काउंटिंग करते हो तो नॉर्मल हमने एमसी का ऐसा बोला ओसीआई का मैंने पूरा रिवर्स है Reclassification is done when and only when an entity changes its business model for managing the financial assets. तो वही उसका अगर मान लीजिए कि अल्टीमेटली उसको जो भी उसके इन्वेस्टमेंट्स है बिजनेस मॉडल मतलब बिजनेस मॉडल फॉर दोज फाइनेंशियल एसेट्स ये मैं किस लिए होल्ड कर रहा हूँ वेदर टू सेल और वेदर टू होल्ड तो वो जब कभी भी आप चेंज करोगे तो देन देयर कैन बी reclassification and then there are certain specific conditions which are further elaborated in this. तो सर पीएनएल से ओसीआई में लेके जाए पहले भी फेयर वैल्यू से क्लासिफाई हो रहा था और बाद में भी फेयर वैल्यू से क्लासिफाई हो रहा है तो वही उसकी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी पर डिफरेंस भी आ रहा है सेम वे अगर ओसीआई से पीएनएल में लेके जा रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे कंटिन्यू होगा तो ओसीआई के केस में जैसे ऊपर वाले केस में था कि गेन्स और लॉसेस ओसीआई में आ रहे हैं तो जब मैं इसको पीएनएल में लेके जाऊंगा तो सारे गेन्स और लॉसेस मेरे को ओसीआई से पीएनएल में रिक्लासिफाई करने पड़ेंगे अच्छा अच्छा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है मान लो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रिक्लासिफाई कर सकते हैं क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग है तो अच्छा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग को कहाँ लेके जाओगे और नॉट हेल्प फॉर ट्रेडिंग ये अपना है पर अगर ओसीआई में लेके जाते हैं तो इररिवर्सिबल ऑप्शन फिर आप उसको रिक्लासिफाई नहीं कर सकते और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को वैसे भी आप कहाँ रिक्लासिफाई करोगे हेल्प फॉर ट्रेडिंग में क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट जब ओसीआई में क्या होता है एसपीआई टैक्स वाला होता है एसपीआई क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कर ही नहीं सकता उसका रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं तो हमेशा ये एमपी टीपीएल में ही आएगी हाँ जो ट्रेड के लिए और जिसका डिवेंचर है ठीक है वो एएमसी के अंदर अपन उसको क्लासिफाई कर सकते हैं हेल्पफुल मैच्योरिटी है एक कंडीशन वो हो गई और एसपीएल पे तो टेस्ट होएगा टाइम वैल्यू तो उसको अमोर्टाइज होगा ट्रेड करना होगा तो एसपीएल Thank you very much all the speakers for explaining the classification of assets. In subsequent class, we shall discuss other aspects of financial instruments. Now I request for. कहाँ है कोई